Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are well, fit and healthy. Okay, student. Today date is 3/9/2020. Chapter number 13, a story of a wheel. So, student, we are doing the book exercises of the chapter, that is chapter number 13, a story of a wheel. So, student, take out your book, open page number 71, and you note down the book exercises in the book, and question answer you will write in your classwork copy. So all of you open page number 71 and note down the book exercises in the book. Now see student, let do recapitulation what we have done in our previous video. So in my previous video, student, I explained you the book exercises of the chapter, that is question number A, fill in the blanks using correct option. So what are these? These are MCQ questions. What are these? These are MCQ questions, and you have to, these are MCQ questions, student, and three options are given for one question, and we have to choose the right option. So we have completed. After that, question number B, put these sentences in the correct order. See, 5 sentences are given about early human beings, and we have to arrange these sentences in the right order. So question number A and B we have completed. Now let us start from question number C, that is true or false. Question number C, right, right, true or false. Question number 1, early man moved on wheels from the very beginning. Question number 1, early man moved on wheels from the very beginning. So student, question is early man moved on wheels from the very beginning. So is it true or false? Yes, your answer is right. This is false. This is false. Why? What is the reason for that? See, in early man moved on wheels from the very beginning, this is false, because early in very, when we are talking about the starting time of the early man, at that time he moved from one place to another. While walking, he moved from one place to another in search of food and shelter. Okay, this is the first stage. And after that, the early man, what they do, he learn how to tame the animals. जब उसे एनिमल्स को अपने वश में करना आ गया, तो कुछ एनिमल्स को उसने अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, ही when he learn how to tame the animals, then he start using these animals also. These animals carry heavy loads for these early mans. तो इन animals को अपने काम में यूज करने लगा. After that he observed that, उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि the round objects can move very easily on the ground. And after that the idea come in his mind
of making the wheel from the log of a wood. So this has been done in the last. That is the reason the first option is false. Now second question, student. Horse and donkeys were used. Horse and donkeys were used for carrying used for carrying loads. So what is the right answer? Okay, your answer is right. True. Yes, student. This is absolutely right. Horse and donkeys were used for carrying loads. So why this is right? Because when a man learn how to tame the animals, जब ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स को टेम करना मतलब उनको वश में करना, कंट्रोल में करना आ गया, तो उसने कुछ एनिमल्स को अपने साथ रख लिया एंड ही यूज दिस एनिमल्स फॉर carrying loads. So this is true. Is it clear? Now next, rafts were used to load so what is the answer? Raft were used to load things. What is the answer? Yes, your answer is right. This is false. Because the early man, when he with the log of a wood, he made the wheel. So what he made? So with the help of a wood he made the cart on which it fixed the wheel. उसने कार्ट बनाई थी, ठीक है, जिसमें व्हील को क्या किया था? फिक्स किया था. So it is not raft. Cart were used to load things. Is it clear? That is the reason this is a wrong answer. Next, fourth question. Today most of the vehicles are run on wheels. What is the answer? Yes, your answer is true. Yes, your answer is right. So what is the meaning of this question?
it is given today. Today means it is talking about the present time. ठीक है, प्रेजेंट टाइम की वो बात कर रहा है अभी की, कि मतलब आज की डेट में क्या है कि टुडे मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आर रन ऑन व्हील. सो इट इज ट्रू. आप कोई भी व्हीकल देख लो with the help of which you can move from one place to another. So how they are moving? These are moving on, all the vehicles are running on the wheels. That is the reason this is the true statement. Now student, take out your classwork copy. We have completed true and false of the chapter. Now take out your classwork copy and note down the question answers of this chapter. Question number D. Give short answer Question number D. Give short answer to the following questions. Okay. So student, when you are writing question answer from the board or you want to note down the important things, ठीक है, तो तुम्हें बार बार पॉज करना होता होगा. इससे अच्छा आप क्या स्क्रीनशॉट ले लिया करो बोर्ड का. ठीक है, आप लोग हमेशा बोलते हो क्वेश्चन आंसर्स send in WhatsApp. You take a screenshot of the board and very easily you can note down from the screenshot. Is it clear? It's a good technique. 4 and 5 students, they are doing the same. They are taking the screenshot this video when they are watching the video. At that time वो जब क्वेश्चन आंसर और मैं बुक एक्सरसाइजेस कराता हूं तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद उसमें से बहुत इजीली और बहुत अच्छा विजिबल होता है. बहुत आसानी से आप उतार सकते हो. ठीक है, क्योंकि आप लोग अक्सर बोलते हो ना सर रिटर्न में क्वेश्चन आंसर नहीं दिए. आप एक बार इस टेक्निक को फॉलो करिएगा. यू at the time of writing the question answer or book exercises, you take the screenshot from your mobile when you are watching the video. So very easily all the things are very clear. If you take the screenshot, you can note down in your copy also. Is it clear? So first question is question number 1. Where did early man live? So anyone can tell where did the early man live? So in very beginning, when early man don't know how to make houses, they are also moving from one place to another place in search of food and shelter. So this is talking about that time when early man don't know how to make the houses. So in the beginning the early man live in a caves. गुफाओं में रहा करता था. अर्ली मैन कहाँ रहते थे पहले? वो इधर उधर घूमते रहते थे, कोई गुफा उनको दिख गई, ठीक है, तो वो उसी में रह लेते थे पहले. इज इट क्लियर? सो नोट डाउन द आंसर स्टूडेंट.
सो अर्ली मैन लिव्स इन केव्स, गुफाओं में रहते थे अर्ली मैन. इज इट क्लियर? नाउ सी वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? इज इट क्लियर? मतलब इन द वेरी बिगनिंग वाई अर्ली मैन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल द टाइम? वाई ही डू दैट? बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू डू कल्टिवेशन. ही डोंट नो हाउ टू मेक ए हाउस. उसे कल्टीवेशन मतलब खेती करने नहीं आती थी. वो फ्रूट्स खाता था और एनिमल्स को किल करके खाता था उनका फ्लैश. सो ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. ठीक है, फूड और शेल्टर की सर्च में, खोज में वो वन प्लेस से अनदर प्लेस क्या है, घूमता रहता था. ठीक है, सो नोट डाउन द अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ए फूड एंड शेल्टर. शेल्टर आपको पता है, जैसे आपका हाउस है, ये आपका शेल्टर है. इट सेव्स यू फ्रॉम द सनलाइट, रेन, कोल्ड एंड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स आल्सो एंड फ्रॉम द थीव्स आल्सो. तो हमारा ये शेल्टर है ना, हाउस हमारा. लेकिन आज तो हम लोग हाउस में रहते हैं, बट इन द बिगनिंग, उस एज की हम बात करें, व्हेन द एट दैट टाइम अर्ली मैन डोंट नो हाउ टू मेक द शेल्टर. उसे हाउसेस बनाने नहीं आते थे. ठीक है, सो एंड ही डोंट नो हाउ टू डू कल्टीवेशन. खेती कैसे करते हैं, क्रॉप्स कैसे लगाते हैं, उससे नॉलेज ही नहीं थी. तो वो क्या, इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो नोट डाउन द आंसर. Early man moved from place. First of all, note down the question. First of all, note down the question. I start writing the answer. Why did early man move ठीक. Why did early man move from place to place? Early man moved from place to place इन सर्च. सर्च मतलब खोजते थे. ठीक है, सर्च मतलब खोजना. ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. ओके, सो नोट डाउन द आंसर किड्स फ्रॉम द बोर्ड. मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूं. डोंट इसे वीडियो ऑन में नोट डाउन करोगे आपको नहीं समझ आएगा. सबसे बेटर है स्क्रीनशॉट लिया करो. टेक स्क्रीनशॉट
very easily you can note down in your classwork copy. Is it clear? Question number 3. Give a few examples. Give a few examples of objects Okay, student, we have to tell the name of the few objects in which the wheel is used. ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम हमें बताने हैं जिसमें आप लोग क्या व्हील्स देखते होगे. ठीक है, व्हील्स बहुत चीज में व्हील की जो शेप होती है, व्हील की शेप और व्हील यूज हो रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं. ठीक है, सो नोट डाउन. Object with wheel are vehicles, potter's wheel, watches, or you can in oblique you can write in the clock also. Generator, machine in factories, ठीक है. So student, give a few example of objects with wheels. So some of the examples are vehicles, जितने भी vehicles हैं आप उसमें wheels देखते हो. potter wheel है, watches and clocks, ओके, उसमें भी व्हील होती है. व्हील मतलब ऐसा नहीं कि एक से मूवमेंट कर रही है ना, एक व्हीकल्स वाली में भी व्हील है. जैसे आप लोग वॉचेस और क्लॉक्स में देखोगे, उनके पार्ट्स देखोगे इंटर ओपन करके, तो उसमें भी आपको व्हील मिलेगी. ठीक है, जो टाइम सेट करने वाला होता है वो देखो व्हील की तरह गोल होता है. ठीक है, वॉचेस है, क्लॉक्स है, जनरेटर है, machines in factory, there are many machine in the factory in which you can see the wheel.
और स्विंग मशीन, वो जो आप लोग की मम्मी कपड़ा स्टिच करते हैं ना, उसकी व्हील की बात की है, स्विंग मशीन एक्स्ट्रा. इज इट क्लियर? नोट डाउन. Now let's start long question answer. Now question number E, you will start from the new page. Is it clear? Question number E, student, you will start from the new page. Question is, describe the potter's wheel. So note down the answer, student. Describe the potter's wheel. The potter's wheel. Okay. So the potter wheel consists of a round. The potter wheel consists of a round, flat, wooden, round, or metal surface. Is it clear? The potter wheel consists of a round, flat, wooden or metal surface. This is the first point. Second point you can write. Second point, it moves when the potter shapes clay on it to make when the potter shape clay on it, when it moves when the potter shapes clay on it. Okay, this much answer is enough. And what does, is it clear? So the potter wheel consists of a round, flat, wooden or metal surface. And second point, it moves when the potter shapes clay on it. And वो क्या बनाता है इससे? मिट्टी के बर्तन बनाता है. Is it clear? So this is your complete answer, student.
and note down this answer in your classwork copy. Is it clear? So thank you student. Have a nice day.